गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट. सो येस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस. सो आज ये वीडियो प्रॉपरली एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ नहीं रहेगा. सो इट्स गोइंग टू बी एन इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ अ वीडियो जहाँ पे आई विल टेल व्हाट वाज द एंटायर प्रोसेस ऑफ माइन from India to Mexico. So in this video I'm going to explain about visa process in India for Mexico dependent visa. If you guys, anyone who is probably applying for dependent visa and they want to stay with their husband in Mexico, for those people what are the entire process for visa and landing तक का what is the entire process that I'm going to explain you today in this video. So probably थोड़ा सा long भी हो सकता है या short भी हो सकता है, I'm not sure. So मैं try करूँगी जितनी भी मेरा experience है वो आपके साथ share करने का, and also the document part. So probably आपको मैं या तो मैं link share करूँगी in my description, मैं वहाँ link add करूँगी. Also हो सके तो मैं I think screenshot add करूँगी to this video also. So yeah, let's start. So I'm carrying my diary with me in case अगर मैं कोई step भूल जाऊँ, because मैंने लिखा है. So मैं step by step चलूँगी so that it will be easy for me also to make you guys understand. If anyone applying for it is only for Mexico dependent visa, this process start from India to landing till landing you're in Mexico. So yes, this entirely I will add into this. Also the TR for dependent, for this I will be recording another session for that. So yes, so anyone who's looking for how to apply TR for dependent visa now, so probably I will record and I'll add a link to description. Yes, let's go ahead. So let's start first with my basic topic. So sorry guys for बार मैं नीचे देख रही होंगी because this is my diary. I have to go step by step. Yes, let's start. Yes, so first thing first, document which is required for any dependent वीसा. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज योर हस्बैंड TR. सो आप जब मेक्सिको में आते हो, सो लेट्स से आपके हस्बैंड काम के लिए आएंगे ऑब्वियस रीजन, तो उनका TR होता है. सो दैट टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड का आपको फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. ऑल्सो आई विल बी एडिंग अ लिस्ट टू हियर. ओके, सेकंड थिंग, योर हस्बैंड पासपोर्ट फोटोकॉपी. सो मेक श्योर usually if anyone is very strict on the document part during that visa process, so they do take a note of that कि we have asked preferably for photocopy, not आप फोटो खींच के दिन क्लिक करते हो. दे आर नॉट आस्किंग अबाउट दैट. फोटोकॉपी मीन्स आपके हस्बैंड का फोटोकॉपी. सो मेक श्योर कि जब आपके हस्बैंड इंडिया से यहाँ आ रहे हो तो आप उनसे पहले ही उनके पासपोर्ट की प्रॉपर फोटोकॉपी ले लें. एंड ऑल्सो आई विल बी एडिंग अ लिंक कि आपको फोटोकॉपी जो पासपोर्ट की है वो किस फॉर्मेट में आपको प्रिंट आउट करानी है, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फॉर्मेट कि उस फॉर्मेट में ही आपका पासपोर्ट प्रिंट होना चाहिए. ओके, दिस इज सेकेंड. थर्ड इज फोटो. योर फॉर वुमेन्स, फॉर वुमेन के लिए स्पेशली आपके ईयरिंग्स नहीं होनी चाहिए, इवन नोज पिन नहीं होना चाहिए, बिंदी नहीं होनी चाहिए. सो आपके फेस पूरा विजिबल होना चाहिए, उस पर एक्सटीरियर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए. सो जो आपकी फोटोग्राफ होगी दैट हैज़ टू बी 80% ऑफ योर एंटायर फेस. दैट मीन्स दिस. मैं आपको एक सैम्पल फोटो भी अटैच करके दिखा दूंगी. यू कैन सी हियर ऑल्सो. एंड ऑल्सो किस वे में लेना, आई बी पेस्टिंग अ स्क्रीनशॉट, यू गाइस कैन सी इट. ओके. The second thing is the third one is your TR. The second is your husband TR. Second is your husband passport. Third is your photograph. Fourth is your marriage certificate. So it is very very important to have a marriage certificate. Also make sure कि आपके marriage certificate में, for example, जैसे मेरे साथ सीन हुआ था कि my name is Rashmi Negi. My entire document is in the name of Rashmi Negi. So my passport was on the name of Rashmi Negi. Aadhaar, PAN, every other document was on Rashmi Negi. But during that marriage certificate, so प्री एज्यूम कर लेते हैं ना कि पोस्ट मैरिज ऑब्वियसली आपका हस्बैंड का सरनेम कैरी फॉरवर्ड होगा. सो दे मेंशन इट रश्मि मेहरा. सो वो मिसमैच हो रहा था. सो आपका जो पासपोर्ट पे नेम है, सेम नेम हैज़ टू बी इन योर marriage certificate. So don't make it like Rashmi Negi Mehra or Rashmi Mehra. What is in your passport, that name has to be in your marriage certificate. That is also very important. Okay, then make sure that, let's say like I was having a 2 passport, my the first passport got expired. So to make sure to carry that passport with you in case if you're having your old passport with you. So and also they will be asking what is the reason of carrying 2 passports. So tell them your justified answer that it got expired or you have made changes and that's the reason you have issued the another passport. Okay, so make sure to carry both of your passport in case if they will ask, you have that document with you. Otherwise they hardly give you time to manage all those things. So yeah, so not to waste your that day, so to carry your document as a safer side. Yeah, and yes, your passport should have validity
more than 6 months. If it is less than 6 months, make sure to issue and apply for another new passport. Otherwise, in visa office, they will check your passport, they will say issue a new passport and then come after certain time. So not to waste your time, make sure that you are doing that entire process before going to the visa office. Okay. And so first was the husband TR, passport, your photograph, your marriage certificate, your passport, having an old passport carry with you. Third is invitation letter. Invitation letter in that sense, let's say, it is not mandatory, but carrying it with you is going to help you in case if they will ask you. Otherwise, it is not a mandatory, but it is good to have this invitation letter with you. So what is basically invitation letter? So your husband is working here in Mexico, right? So your husband company will send an invitation kind of a letter that, okay, she's my wife, I'm staying here, working with this certain company, and yes, I'm inviting her to stay with me as she is my family member, she is my wife. Yes, so that kind of invitation letter, I'll probably, if I'm having a sample, I'm going to attach it here if you can see it. If I'm not, so you guys can check it on internet. I'll try to get a sample from my internet, I'll try to paste it here itself. Yeah. Then last but not least, it is very, very important, is your NUT number. So the NUT number is basically is kind of an invitation kind of a thing that from Mexico, आपके जैसे लाइक वी हैव अ पासपोर्ट नंबर, राइट? सो योर हस्बैंड विल गोइंग टू आइनम होता है, आइनम में आप जाएंगे, आपके हस्बैंड वहाँ से आपका नट नंबर इशू करेंगे. सो वो नट नंबर जब आपका इशू हो जाएगा, वो आपको इंडिया भेजेंगे. आपके हस्बैंड यहाँ से या जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, वो आपको इंडिया भेजेंगे. वो आपको ओरिजिनल आपके साथ कैरी करना होता है. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. विदाउट नट नंबर you will be not getting a dependent visa. So if you're applying for a dependent visa, it is important to have a NUT number. If not, then so probably you will be applying for a tourist visa, which is hardly to get. So yes, make sure to have that NUT number. So I'm going to explain that NUT number process also in the later half. So yes, this is a certain documents. Once again, I'm pasting this photograph, the final one. These are the certain document you guys have to have for your smooth visa process. Okay. Now this is a document. Once the document is finalized, you in India you get two options for your visa process for visa interview center. One is in Delhi and the second is Mumbai. I prefer Mumbai. I preferred Mumbai because they have a 1 day process for the entire visa thing. So same day, once everything is smooth, same day you will be getting your visa stamped. But Delhi has a very lengthy process, as in like the day you're having your interview, visa date, appointment date, that day they will do your document process, biometric interview part, and then they will take your passport. And if they are not taking your passport, that means you are not getting visa. If they are taking your passport, that means you'll be getting visa, but they will allocate you certain dates, probably after 2 days, 3 days, 4 days, I'm not sure. Like for in my husband case, he applied from Delhi, but it took like 4 to 5 days to get that visa. So they took my husband's passport, and so we were very sure, because अगर आपका passport लेते हैं, that means you are getting visa. If they are not taking your passport, that means you are not getting visa. This is the process I'm talking about, Delhi process. So and my husband was on the work visa, so so this is the process I'm talking about, the work visa for my husband. But for my dependent visa, I applied through the Mumbai, through Mumbai in Mumbai website. So yes. So Mumbai, so I'm pasting the website link. You guys can see it's called CTES website. आपको CTES website के through ही अपॉइंटमेंट बुक करना होता है. सो CTES, आप अगर देखेंगे मुंबई मैक्सिको एम्बेसी की वेबसाइट एंड देन दिल्ली मैक्सिको की वेबसाइट, आपको वहाँ से नहीं अपॉइंटमेंट बुक करना है. यू गाइस हैव टू बुक अपॉइंटमेंट थ्रू CTES वेबसाइट. आई वॉज इनिशियली, हम भी बहुत कन्फ्यूज हुए थे, माई हस्बैंड ऑल्सो, बट देन वी लेटर गॉट टू नो दैट there is a different website that called CTES. You guys can see the link, and I will add that link into my description also. So आपको CTES के through ही जाना है. For this CTES, how you guys can fill that form, for that I will be doing another 5-minute or 3-minute short video. So probably I will add that link also. Yes, CTES website, especially I'm talking about the CTES, make sure to remember that. Okay, so you guys can go for, so I will suggest, if anyone applying for a dependent visa, go for Mumbai. If Delhi is near to you, that's your choice, but I would, that's my choice, and I chose Mumbai for the smooth thing, seeing the visa thing I got. Yes, I don't move to the next point. Yeah, so once this appointment thing of yours is done, make sure you have that receipt with you. You will be going to pay
that visa process fees. Like in my case, it was somewhere around 4,700. मैंने क्या किया था, my वीज़ा इंटरव्यू वॉज इन द मंथ ऑफ जून, तो मैंने मई में ही रजिस्टर किया था, तो मई में द फी वॉज 4,700 समथिंग, वेयर इन द मंथ ऑफ जून द फी गॉट रिड्यूस टू 4,600. I was 100, मैंने 100 एक्स्ट्रा पे किया था. एनी वे, इफ यू आर पेइंग एक्स्ट्रा, दैट अमाउंट इज नॉट गोइंग टू बी रिफंड. येस, एंड लेट्स से इनके आपने लेट्स से इन अ मंथ ऑफ मई आपने 4,600 पे किया, बट जून में जाके वो 4,700 हो गया. इन दैट केस मेक श्योर यू आर पेइंग द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट एंड कैरी दैट रिसिप्ट विद यू. अगर आपका 1 रुपये भी आप कम पे करोगे, ट्रस्ट मी, दे विल नॉट गोइंग टू मेक यू सिट इन द इंटरव्यू और द वीजा प्रोसेस. सो मेक श्योर you are paying the exact amount. If you're paying more, they don't have an issue. If you're paying less, that amount, not to pay less. Paying more is anyway, they don't care. Yes. And yeah, once that is done, also to carry your bank statement that will show okay, you have paid this much of amount. Receipt you have to carry. Bank statement is an optional thing, but I will suggest to carry that statement with you in case sometime they will ask, sometime they will not ask. So carrying it is with you anyway going to help you in case if they will ask you. So statement में आपको लेके जाना है जहाँ पे आपकी वो entry हो that you have paid this much amount to this account. Okay. To the account part, make sure, so I'm attaching a link also, I'm pasting a screenshot. So the Mumbai, they have a different bank account, and the Delhi, they have a different bank account. अगर आप दिल्ली में अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो, तो द दिल्ली वाला अकाउंट यू गाइस हैव टू, इन दैट अकाउंट यू हैव टू पे. मुंबई का सेपरेट अकाउंट, दैट डोंट मिक्स इट टुगेदर, बिकॉज अगर आपने दिल्ली में पे किया है एंड यू आर हैविंग अपॉइंटमेंट इन मुंबई, ट्रस्ट मी, दे विल नॉट लेट यू इनसाइड. सो मेक श्योर you guys recheck it. Okay, so yeah, once it is done, so you all are done with the entire proper document things. First thing was TR, husband passport, your photograph, marriage certificate, passport validity, check it. If you have a new passport, carry it. I'm just repeating all these things again to make you easier. And the last one is your NUT number and this receipt and the statement. Once all these documents are done, you are done with your entire this appointment part also. You have booked your appointment, then having this document, you are good to go. Yeah, so now we'll come to the day where you guys are having your appointment dates. Okay, so agar aap Mumbai mein, I was in Mumbai, so I'm going to share my Mumbai experience. So Mumbai experience was the entire process was for 1 day. So I reached to Mumbai visa office. It was my appointment was of 9:15. I reached early because I was not sure about the traffic part, so I reached around 7:30. So I was waiting outside of the visa office because they will only let you in sharp at 9. So once we were inside, so they were checking your receipt at the gate, at the security person was checking your receipt, the fee part which you are paid, and once it is verified, and then they will let you inside one by one. So up line, they will security person ही आपको बोलेगा start forming a line. So in line I was the third person, 1 2 3, then it was going on. So मैं तीसरे नंबर पे थी, तो मैं जल्दी भी अंदर चली गई थी. So initially आप रिसेप्शन पे जाते हो, they will ask you to submit your phone, any essential which is of your purse or something. So आप उसे वहाँ देंगे सिक्योरिटी पर्सन को, वो लॉकर में डालेंगे और आपको लॉक की देंगे. So this process I like in Mumbai. दिल्ली में ये process नहीं था, because I know this because my husband interview happened in Delhi, so I was carrying his all the bags and everything. So yes, so the good part is they have a locker, so आप अपना सारा essential उनको सिक्योरिटी पर्सन को देंगे, they will be giving you the key. So आप रजिस्टर में एंटर करेंगे अपने नाम के आगे that you have this number of key, lock number 3, you have a lock number key. So once it is done, they will ask you to sit. आप उसमें बैठे वहाँ बैठेंगे. So they will and जैसे आप रिसेप्शन पे जाते हो, they will put it number 3 because I was a number 3 person, so they mention it 3. So then they will be calling number. There will be a 2 cabin, and one by one they will be calling him. So number 1, number 2, number 3. So I was number 3. I was already known that in number 1 was already one person sitting, in number 2 in that cabin already 2 people are sitting. So जैसे ही number 1 बाहर आया, I was very sure that it was my number. So मैं number 3 मैं अंदर चले गई, and there was a lady, and she checked my all documents. She was aligning in their order. मुझे नहीं पता था, बट उन्होंने मुझसे ये सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए, एंड वंस द डॉक्यूमेंट वाज डन, एंड उन्होंने हमें बैठाना शुरू कर दिया वापस से 1 2 3 सिट अकॉर्डिंग टू योर नंबर ओनली. सो हम बाहर उसके अकॉर्डिंग बैठे रहे, एंड
देन जब सबके डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो गए थे, देन उन्होंने बायोमेट्रिक करना शुरू कर दिया, बायोमेट्रिक एंड द फोटोग्राफ सेशन, एंड दे स्टार्टेड. सो आई वाज नंबर 3, मेरा नंबर 3 पे आया. माई they took photograph of your, they took a biometric. So this process was done. Once it was done for everyone, then they started the interview process. Okay, so interview process जैसे start हुआ तो she was lady and so जैसे interview process so मेरा interview was just for 1 minute only. मैं जैसे अंदर गई 1 मिनट में that lady asked me like 3 questions. What is your husband name, and when your husband moved to Mexico, the exact date, and for how long you guys being married. So yes, and also the last question, for how many days or year you are planning to stay in Mexico. So make sure that these 4 questions, like these were the questions they asked me, she asked me. So मैंने वो आंसर दे दिया था जो मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स में था, एंड ये सारे अकॉर्डिंग. सो मोस्टली जो ये इस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछते हैं डिपेंडेंट वीज़ा के केस में, मैं आपको बता रही हूँ, दे चेक द जेन्युइनिटी ऑफ द पर्सन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केस में लोग फेक marriage kind of a thing also they do, right? So I'm not sure, I'm not claiming it or something like that, but this is my belief. So they check your genuinity कि आप genuine है या नहीं है. They will check. So like मेरी शादी को almost 2 year होने वाले हैं. So they check. तो मैंने बोला 2 year and then say कि तुम्हारे husband कब गए. So I said this was the exact date. Then he reached. तो बोलते okay. So why you are going? So because मैंने she asked me like why you are going with him. So I said he is my husband. So I have to stay with him. So this was my answer. And yes, this was the 4 questions. So I will going to be attaching further more question to you guys can see on my screen also. So these are the other question they will probably ask. I'm not sure, but this with me she asked only the 4 question, but you guys can prepare yourself also. This interview process, okay, so मेक श्योर बिकॉज आपके हस्बैंड का भी इंटरव्यू होगा जब आपके हस्बैंड नट नंबर लेने जाएंगे. सो जब मेक्सिको में वो जाएंगे आपका मैरिज सर्टिफिकेट लेके. सो मेक श्योर कि जब आप इंडिया में हो और आपके हस्बैंड यहाँ आ रहे हो, आप उनको अपना ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट दो, उनको साथ लेके भेज देना, ठीक है? बिकॉज वो आपके लिए नट नंबर जब अप्लाई करेंगे उस नट नंबर के टाइम पे दे वांट योर ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर कैरिंग दैट मैरिज सर्टिफिकेट विद यू. आपके हस्बैंड आईएनएम जाएंगे, वहां पे आपका नट नंबर के लिए अप्लाई करेंगे. सो जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा वो स्पेनिश में कन्वर्ट होगा, वहां आपके हस्बैंड का इंटरव्यू होगा. वो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछेंगे दैट इज गोइंग टू रिलेटेड टू योर मैरिज ओनली. सो मेक श्योर कि आपके हस्बैंड जो वहां आंसर दे रहे हो वो आप इंडिया में भी आंसर दे रहे हो. दैट आंसर हैज टू बी मैच्ड. सो आपके आंसर हे वाई नहीं होने चाहिए. अगर आपके मिसमैच होंगे सो यू विल बी नॉट गेटिंग वीजा. सो मेक श्योर और आपके हस्बैंड ने जो आंसर दिए हैं सेम काइंड ऑफ आंसर यू गाइस आर, बिकॉज आपके हस्बैंड से ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा नहीं पूछेंगे रिलेटेड टू योर मैरिज ओनली. सो यू गाइस शुड हैव नोन द बेसिक नंबर ऑफ योर मैरिज ऑल्सो. सो यस, so I believe this is all clear. And yes, once it was done, so this entire process took 3 hours. 9 मैं 11 बजे शाम बाहर आ गई थी. And once my interview was done, the other lady at the reception, she asked me like I was on the 3rd one. So the first second person they asked, you guys can go, we will go giving you call. So if you are getting call, so you guys can come and get your stamped visa. So आप पासपोर्ट अपने साथ लेके जाओगे and मैं पासपोर्ट अपने साथ लेके चलेगी. एंड 11 बजे मैं निकल गई थी वहाँ से. 11 बजे दे सेड कि यू गाइस कैन गो, यू गाइस विल गेट अ कॉल. सो मैं जैसे गई एंड देन 2:30 अराउंड 2:30 इन द noon I got a call from a landline number. Make sure that आप अपना नंबर एक्टिवली चेक करते रहें या साइलेंट मोड पे मत रखें, बिकॉज दे विल गोइंग टू कॉल यू फॉर वंस ओनली. अगेन वो बार बार कॉल नहीं करते हैं, आपको एक ही बार कॉल करेंगे. अगर आपने वो मिस कर दिया है सो वो आपको नेक्स्ट डे कॉल करेंगे फिर. सो मैंने जैसी कॉल आया आंसर डिड एंड दे सेड कि यू कैन कम. सो मेरे को 2:30 कॉल आ गया था. शी सेड कि आपको 3 to 4 के बीच आना है टू स्टैम्प योर वीज़ा. सो मैं जल्दी से गई बिकॉज आई वॉज स्टेइंग नियर बाई ओनली. एंड मैं पहुंच गई थी 3:30 के अराउंड वहाँ पहुंच गई थी मैं. एंड देन 3:30 से मैं अंदर गई. पहले उन्होंने सिक्योरिटी में पूछा कि आपको कॉल आया. सेट येस. तो उन्होंने बोला कौन से नंबर से आया आपको दिखाना पड़ेगा. तो मैंने उनको वो नंबर दिखाया. देन उन्होंने मुझे अंदर एंट्री दी. मैं अंदर गई. उन्होंने मेरा पासपोर्ट कलेक्ट किया. अगेन लॉकर मेरा जो भी एसेंशियल सामान था लॉकर में रखा. मैंने फिर से एंट्री करी एंड देन दे टुक माई पासपोर्ट एंड मुझे वेट करने के लिए बोला. आई थिंक आई वेटेड फॉर 10 minutes only and I got my visa. Yes, so this was the process.
एंड नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट जहाँ पे आप इंडिया से फ्लाई करते हो टू मेक्सिको. सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दैट प्रोसेस ऑल्सो. आई वॉज फ्लाइंग वाया एम्स्टरडम KLM फ्लाइट से. सो एट KLM काउंटर द ग्राउंड स्टाफ विल गोइंग टू आस्क कि आप किस लिए बाहर जा रहे हैं एंड आपके क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं. सो आई शोड देम माई हस्बैंड TR एंड द इन्विटेशन लेटर आई रिसीव्ड फ्रॉम माई हस्बैंड कंपनी. सो ये 2 दिखाए एंड वी वर गुड टू गो बिकॉज इफ वी आर नॉट हैविंग दैट सर्टेन एट इमिग्रेशन दे हैव नॉट आस्क्ड एनीथिंग. They check like why you are going. I said this is my dependent visa and they said okay. So I got an approval from there and everything was done. And then I landed on Mexico. So at Mexico immigration they asked me again because Mexico the only problem is the people don't know much English, so they don't in your visa part it's dependent, right? So they don't know it's a because उनको नहीं समझ आता है. तो they said उनको ऐसा लगता है it's a work visa. तो आपसे आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगते, बोलते हैं कि इन्विटेशन दो. तो आप ना उनको एक्सप्लेन कर, मतलब मेरे केस में आई हैव टू एक्सप्लेन देम दिस इज नॉट अ वर्क वीजा, दिस इज अ डिपेंडेंट वीजा. माई हस्बैंड इज ऑलरेडी स्टेइंग हियर. सो मैंने अपने हस्बैंड का TR दिखाया एंड इन्विटेशन लेटर जो मुझे मिला था मेरे हस्बैंड कंपनी के बिहाफ में, so मैंने उनको दिखाया एंड देन इट वॉज अ गुड टू गो. सो वो आपके पासपोर्ट पे लिखते हैं, वीजा पे लिखते हैं काने 30 डेज. दैट मीन्स आपको आपका वो जो वीजा है वो यहाँ पे 30 डेज तक वैलिड है. आपको उस 30 डेज के अंदर अंदर अपना TR के लिए अप्लाई करना होगा. सो आपका TR विद इन द 30 डेज आपके हाथ में वो TR होना चाहिए. अगर आप विद इन 30 डेज में नहीं अप्लाई करते हो तो आपको डिपोर्ट करके वापस इंडिया भेजेंगे. तो मेक श्योर दैट यू हैव दैट 30 डेज. विद इन दैट 30 डेज यू गाइस आर अप्लाइंग फॉर योर TR. फॉर TR आई एम गोइंग टू मेक अनदर सेपरेट वीडियो. Okay guys, so this is going to be an informative, this is kind of an informative video for those people who are traveling from India to Mexico on dependent visa. Yes, thank you for watching. I'm going, if anyone is having some sort of doubt, confusion, you guys can mail me. I'm going to add my email address on my description. You guys can mail me. I'll support, I will help you. मेरे को जितना knowledge होगा. And yes, thank you for watching.